Hello, am I audible? Am I audible? Okay, so I guess we are live. Okay, so in the last session, what we have discussed. So in the last session, we were trying to discuss Redux, right? Okay, what actually Redux is, uh, what actually context API, where we use context API, when to decide कि context API is good for our project or not, or whenever you want to go with Redux. And we have also seen the, you can say, alternative of Redux, that is Just-end. We have also seen Just-end as well, right? So now, if somebody asks you that what actually are the parameters that we decide on, okay, which one to go with, right? So answer is simple. There is no as fixed parameter, but you need to just decide कि what actually suits your project. So it is not like that whenever you are cloning a project, तो ये कभी ऐसे नहीं होगा कि अगर आप प्रोजेक्ट को क्लोन कर रहे हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा कि इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्रोजेक्ट कितना स्टेट्स हैंडल कर रहा है, ट्रैफिक कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस प्रोजेक्ट की बंडल साइज क्या है, बिल्ड कैसे बन रहा है, वो सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो सो सॉरी टू मेक ब्रेक इट टू यू, बट यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि स्टेट मैनेजमेंट करना भी है या नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, अगर नहीं करना है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, राइट? तो जब भी तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज के बारे में डिसाइड करना हो कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे होगा, तो इट इज ऑलवेज कम्स डाउन ऑन ट्रेड ऑफ, ओके, कि whenever you want to decide कि I will go with context API, just stand, redux, recoil, and there are many more options, or flux architecture. So you need to come to one conclusion that कि whether my application do require the redux right now or not. So let me just give you one understanding directly. So let me just share my screen. Okay. So whenever your application is on starting, that is a pivot level application. I'll just say your application is on pivot level. That is a starting level. So you need to understand that every component that you are having is going to manage the state on their own using user state and those kind of methods. Your component is frankly speaking is capable enough to handle their state, but the problem is whenever two component combined together want to share the same logic or same state, that's where you will come into picture कि I will pass props, and I will what? I will pass props. I said, well, fair enough, why not pass the props? But the problem is कि if my structure is like this, the structure is like this, then let's suppose this is component number one, component number two, and component number three. So you will be able to transfer the props from one to two, then two to three. But the problem is, this problem is known as props drilling. And before this lecture, what I was focusing on little bit of React.js, right? Because we are also going to study React.js, but with little bit of system design, little bit of front-end design. That's why I named this series as front-end engineering. So we'll be guiding you, or I'll be trying to give you understanding about a general techniques that you can use to answer question in the interview, regardless of the framework that you are using. It is not just like you are using Vue, or you are using Angular, you are using Next or React. It is similar to like this. So that's why we are going to understand few optimization hooks, few optimization technique, lazy loading, debounce, throttle, image optimization. We are going to discuss about those stuff. So whenever I was doing this was a problem, and everyone knows this problem by a name. Problem name is props drilling. Okay, and there is a one more problem that despite of having prop drilling, I have continuously having a one issue over here. That issue is I can only pass these properties from top to bottom. There is no way around. There is no other way around I can transfer the property back up. So whenever we decided that we'll be trying to move the state up, so what we decided, let's suppose this is a parent, okay, and the parent have two child, okay. This is not tree, but let's suppose parent have two child. Let's name this A, name this B, and this is C.
And you know that ki whenever you are talking about a property transfer, the property transfer can be look like this, any A to B or A to C. But problem is ki if I my B want to share the data with A, not possible. If my B want to share data with C, is not possible, right? uh, Let me check comment as well. Sorry for late. No issues, Renox, no issues. So whenever we want to transfer the data from B to C as well, this is not possible. That means data sharing between sibling is not something that we allow. But the problem is how we to decide if I want to reverse this flow. Then obviously concept name is called state uplifting. That how state uplifting come into picture. State uplifting is a concept where we try to find a common ancestor. That means I will find a common parent between these two. So I know the common parent between these two is A. So I will transfer my state to A, so A can transfer the data to C. That is called shared logic. So whenever you are having a one or two component, you want to have something called, let's suppose, shared logic. And in shared logic, the concept name is state lifting. You also known as state uplifting. Whenever you find a common ancestor between two child or two siblings, and you transfer your state, you move your state up to a common ancestor, so you transfer the property to your sibling as well. And to utilize this state uplifting, we have a user state we can pass as a props. We take help from props and the user state as well. But if you talk about little bit, this is a complex structure to work with. Again, not as complex as Redux, but yes, this is also some critical complexity involved over here. So what we use to transfer the data between two parties, we try to have a platform which will be very efficient in order in this type of operation. It is built for this type of operation. So we try to have a context API. And what actually this context API do? Context API is nothing. It's a hook to hook combination. We create one context. That means we create a postman, let's suppose. And what this actually postman do? Postman will take my data, whatever data I want to send to any of the component. And there'll be one more hook. It is known as a use context. It is a hook that let me use this postman, which is containing my data in any of the desired component. That means if I want, I can share the data between any component from parent to child without drilling the props. That means again, I am managing the state, but in a different manner. We are not sharing props. We are not drilling the props. We are not doing a state uplifting, but we are creating a medium. That's why it is known as API. API is an application programming interface. Simple. That means it's a interface between two entity. Let's suppose entity number one, entity number two. It's a direct interface between two entity that can transfer the data from here and here. And what is being transferred? Context means the environment, the access of that particular component will transfer from one entity to two entity. That is known as context API. But the problem is there is a limitation of the context API. And what is the limitation of the context API? Limitation are simple. When your logic become very complex, logic complexity, and whenever your hierarchy gets complex, that means multiple layer get involved. So in between, what happens, you can lose the data, you can have a breach of data. And whenever your component dependability increase, this is much harder to use a context API. So what we thought of, instead of using a context API, we will try to have an entity which is having expertise in this kind of domain. That means whenever you're any of the, let's suppose, you are having fever, right? You have tried a few tablets for the fever, but it was not something that will be cured by a simple paracetamol. So what do you decide? You decide to see an expert, let's suppose a physician. Or if you are having some other difficulty for surgery, you will be going to surgeon. If you are having a difficulty in liver, you will be going gastrophysician, right? There are tons of expertise that everyone have. Because if you want to learn one stack, right? Yeah, AI, machine learning, yeah, some other concept like system design, high level design, low level design, you try. Let's suppose I am the one who is taking the session. If this was session on Java backend, there might be some other mentors who is coming to take the session. But
This is my expertise to guide you towards MERN stack, system design, front end engineering. So I am taking the session, right? But the problem is I'm having expertise in certain domain. So whenever I want to have a expertise in state management, whenever your state get complex to manage, you will have to move to an expert system that is known as singleton architecture, or let's suppose monotonous architecture, or we can say single bay bind. Okay, whenever your data is flowing in a single bay binding, that's what the flow that I desire. And if we are having a single way binded data flow, it will be very helpful in state management, right? But problem is that there are tons of state management tool that is available. But the problem is or the fun fact is they work on the same thing. They are having a same philosophy behind the scene to work with. So let's suppose the philosophy is was known as single source of truth or single way bind. Data should be flowing single way, that is from A to B, there is no other way around. And this SST was known as single source of truth. I should have a single source of truth rather than having a distorted structure for the state. So we name this thing as a store. Okay, the people who are joining for the first time, that's why I'm recapping it. We are going to talk this about store, and we are having going to have some function. That function will be known as reducer or slice. And slice can be of two types, synchronous or asynchronous. Whenever we are having API call, we can do it. But the problem is key in any React application, just want a simple, quick yes or no. Have you ever felt key your application, whatever you are typing, is lagging? Have you felt sometimes your React application is lagging? Everyone have felt that key, despite of using this, you can say optimized library or you can say front end library, your application is still lagging. And in this scenario, when your this particular thing is lagging, you will have to understand one thing: why they lag. Because whenever you are using Redux, it is having a single source of truth, is having single way bind. It should have the optimized rendering, it should have an optimal order of execution, but that's not like this. Redux comes with certain complexity. Redux do have complexity on their own. So let's suppose I'm having a form. Okay, you might be knowing this fact ki we can manage form state, we can manage form handling using Redux as well. That is all Redux form. So why we use formic as a library to handle form handling in React? Why do we do not use Redux? Because if we want, we can use Redux for handling the form or form submission or error handling. So simple. If we are using state management library as expert to handle each and every submission, each and every state, so why we are not using, you can say Redux form? Why we are using a Formic or some other library to handle the form submission? Answer is कि whenever you are changing anything in input, on change, on any input change that you are making, you have to call that store every time for making certain change. So what do you mean by on change? Let's suppose I'm typing because. So whenever you are typing because, on every key press or any every keystroke, this on change will be called, and on change will dump the data into Redux store. And for certain amount of small change, just for because change, the Redux will be called, that means store will be called 5 times. Or it is, you are lucky that my name only contain 5 letters. Let's suppose somebody's name is containing 10 more letters, it will be 10 more time. Let's suppose I'm having a full paragraph to store, you will be calling it 20 or more than 20 times. That means for a certain kind of behavior, I'm reinitializing, I'm calling my Redux store multiple times. And that's where, because in Redux store there is not a single reducer that is happening. They can have it, we can have a 10 more reducer inside one store. So they will be reinitialized or will be reload, you can say force reload. So for that kind of behavior, we do not want to disturb our Redux for form handling. But the problem is Redux can be used for form handling, theme handling, or auth handling. But why we do create search context, auth context, order context rather than directly storing it to Redux? Because we might feel lag.
that's why we say कि whenever it comes to performance optimization, it's not like this कि we are having a certain experts on that particular domain, so it will be the only solution that can exist. No, it is not like this. You can have multiple solution for that problem that will start at the pivot level. So your whenever your any application you are trying to design, never ever jump ki I will use Redux, I will use Just, and I will use Recoil. Start with simple props passing, and as your application goes bigger and bigger day by day, you can utilize, or you can, let's suppose, change the state management library as the updates come. Now, whenever you want to decide ki how actually optimization works, so let me just guide you towards certain concept. So one concept that you need to understand is known as code splitting. Why I'm including front end system design little bit in this particular thing, so you need to understand that front end engineering do include system design. So whenever it comes to code splitting, what do you mean by code splitting? Code splitting, the simple mean it's a let's suppose uh, it's a wider representation of one technology or one thing that we use, that is known as lazy loading. Okay, have you heard about lazy loading? Let me check comments. Have you heard about lazy loading? Okay, if you have not, yes, you have heard about lazy loading. What actually lazy loading do? Lazy load is something that says, ki, let's suppose I'm having an Amazon homepage, or Amazon, let's suppose, contain 10,000 product. So on home page or on the product section, I do not see 10,000 pages or 10,000 product. Let's suppose I only see 10 product at once. Let's suppose 10 product at once. Not, let's suppose we want to create one more product, 10 product at once, or 8 product at once. Now, what about remaining of the product? You will say कि I will use a pagination. It's simple. What do we use? Page 1, 2, 3, 4, and 100. That's how we are going to make a pagination. But the problem is कि if we do not use lazy load, we do not use code splitting. So lazy load, if it is not included, all 10,000 product will be loaded on the first render itself. Or whenever you are loading 10,000 product at the first load, that is called hot load, it will take much time. It will be a lot of time taken to just render that particular page. But will be coming on directly 10,000 page? Will user will consume all 10,000 product at once? Answer is no. User might max to max can go to page number 5, 10. Let's suppose 10, let's suppose it can only see 100 product in before it orders something, or he or she orders something. But why we are loading this 10,000 product at once? So this is something that you need to take care as a front end engineer. He never ever, or lazy loading is not something that is a part of React. Okay, lazy loading, Redux, code splitting, it is not part of Redux or React. It is a part of designing a system. How you keep that in mind, what you will take care, what you will, you can say, keep in mind while designing a system. That's why I'm calling this as a front end engineering, not React engineering. Now, when it comes to this setup, so we want to prevent this hierarchy or this phenomena to happen. We cannot afford to load 10,000 product at once. What we can do, we can only load certain amount of product which user is going to interact with initially. But if user demands few more product from me, I will load that on that moment only. I will not be loading it prior that user demands. Whenever user demand, I will be giving the code on the go itself. So let's suppose user is directly coming on page number 1. So I will load these first at 8 product or 10 product. And where I will load this product? Because if I am loading 10,000 product, why my, you can say, application load slow? Why my application looks like it is lagging? Because these 10,000 product come into our RAM. Okay, because all this DOM that we create will be stored in our RAM memory.
or you can say primary memory. So whenever you try to load 10,000, or your memory capacity, let's suppose 32 GB, or let's suppose 16 GB. 32 GB is something that I'm taking a, you can say, max example, because my laptop do contain 32 GB. But let's take a general example. Let's suppose you're having 8 GB, 16 GB, or you are loading 10,000 images or 10,000 product or card in the RAM. What will happen? Simple answer, you might feel lag, or one of the important thing, you might be feeling a heat. That means your laptop might heat, or your battery depletion will be increased. Your battery will be consumed very rapidly. So how actually, because RAM is meant for certain task, that is a fast operating task. It has to boot something fast, so you can store that into your system or into your RAM. But if you are holding 10,000 product into that RAM to load, it will be a lot of chaos in that. For what we do actually, we try to do lazy loading. Okay. And when it comes to lazy loading, what actually lazy loading is, let me just show you. Lazy loading is ki first I will load only 10 product. Simple. Load 10 product, and remaining of the product you can load when the user will demand. But the problem is, can I do that? Or do we do this? So let's suppose I'm creating a pagination 1, 2, 3, and let's suppose 10 product, right? And page number 1 I am showing. What if user directly click on page number 10? Then what we have to do? If user is directly clicking on page number 10, that what we can do? Tell me. If user is clicking directly page number 10, what we can do? Any idea? Give me a thought. Have you given a thought? Ki what will I do if user is clicking on directly page number 10? You will say, what I have to do? Actually, I don't have to do anything. I just have to load the page number 10. But the answer is, can you load page number 10 directly? Multiply by the number per page and load from that. Yes, we can also do that. But have you heard about a term called offset? Have you heard about term offset? Ranking and offset. It's also in SQL or data analysis term. We can offset the pages, re-rank the pages. So this is the first thing in system, and there's a few term that you need to understand, that is known as preload, prefetch, preflight, and preconnect. Right. So what do you think? Can we skip 2, 3, and 7, 8, 9? No, we cannot skip. We'll download these particular thing, and then we'll offset it. We'll replace that page number 2 with 10, and we'll be able to download it, or we'll be able to show it. What will happen actually by this particular method? Ki your component will only be loaded when your user demands it. And lazy loading can be done on the basis of page number, that is pagination. It can be on cursor base, that is a scroll bar. You can on cursor base, you can have a scroll bar. And scroll bar means, if you go on, let's suppose one website, let's suppose you are going on Chroma or Amazon, they have multiple products. So will you be, when you are having a, you can say, a ick to open network tab, everyone do open the network tab in engineering. When you open the network tab, you will see the moment you scroll certain section, the images of that certain section will be loaded, right? But there are few images that are preloaded. So if we are not reaching to that section, these images are preloaded on the home page. The first 10 images preloaded. What we can do, why we do that? That is called preload. So in, let's suppose we are firing in server side rendering as well. Let's suppose the first document that will go any on the screen, that is known as HTML, and that's we call as document. Okay. First document will be coming an HTML document. It will be loaded. That's called simple structure. And that's actually what I am teaching with the server side rendering. Actually, it will be a simple page structure card. There will be no data, because data and the interactivity coming from the JavaScript part, right? But how you are able to see the JavaScript instantly, the moment page load, your JavaScript is also loaded. How you are able to do that? So that is known as preload. Preload means कि whenever you are on, let's suppose a page, let's suppose this is your page, HTML. In HTML, there's a head. In head, there is a meta tag. Then your body is starting.
Or in head tag, we'll be finding a script tag which will load my JavaScript. The moment I see that there is a JavaScript tag, I use preload. What I use? I use preload. What preload is? Preload is something that hints the server, I will require this JavaScript after some time. Please start downloading it. And this is also known as resource hinting. What actually we do? We do server send a resource hint. I will be requiring that resource, so please be ready with that resource. Now, after that, there is a one more concept in optimization part that is also known as, let's suppose this was known as pre-flight. In backend engineering, generally when I deal with APIs or in development part, we do have a thing called, let's suppose A is a system A, this is system B. So everyone knows ki we'll send a request, I will receive a response. That's how we do. We'll use a HTTP connection, or we'll be sending a request in JSON format. I will receive our data, let's suppose in JSON format. I'll receive a response. Now the problem did it is it the perfect representation of a request response cycle? Answer is no. Exactly not. We'll be requiring few more things. The first thing that happens is known as pre-flight. What do you mean by pre-flight? Pre-flight means is a checkup. It's a sanity check. Ki whenever you are going to a certain system, let's suppose B, is B accepting you or not? Let's suppose I'm sending a empty request from A to B just to handshake. Okay. If what I'm doing, I am just sending a request for handshaking. Ki please sorry, do and check कि everything is all right or not. So it will go empty header, that is called option request. It will go and it will handshake it, TCP handshaking, it will do the handshaking part and come back with certain, let's suppose, response. Let's suppose response is 200. Everything is all right. Now I will send the actual HTTP request to send my data, to send my request. And that request that you are sending it to test whether everything is correct or not is known as pre-flight. So there's a term called preload, pre-flight, pre-connect in system design. When it comes to those kind of optimization, these terms come into picture. So when it comes to lazy loading do include preload as well. So lazy loading is a phenomena where we hint, I will be requiring that particular resource. So please keep that resource downloaded, but do not load that product into the RAM itself. Please keep it in the node DOM itself. And whenever I require it based on pagination, based on cursor, based on section observer, based on a scroll, you can show me that particular image or particular resource. And what actually is code splitting? Code splitting is just a, you can say, fancy name or just a broader implementation of lazy loading. Code splitting says कि rather than, let's suppose your code is that much large, let's suppose your component is that much large, 500 lines of their code is there in your component. So rather than having 500 lines of code in single component, you tends to divide, you have a single sense of, you can say, failure key. This is too much to handle, this is a component overkill, we are just writing too much code just for the sake of single file. It is not, this is not something that you should do. And in this case, we tends to divide this file into small pieces, that is known as chunk. I will divide that into chunk, and let's suppose chunk number 1, chunk number 2, and chunk number 3. And that chunk will be loaded on the basis of the requirement itself. It is not something like that it will be loaded at the one go. And who will divide this particular thing? Let's suppose I am dividing, I'm writing, rather than writing full home page, I'm dividing card component separate, navbar component separate, sidebar component separate. But whenever I need to arrange them, who will arrange that for me? Right? Who will arrange that for me? Let me check the comment. Comment is saying, hello sir, I have a question. We start as a prop passing between component and then complexity arises, then moving to state management can cause extra time consuming. No, nothing like that. When what I am saying is called incremental process.
What do you mean by incremental process? Incremental is not something. Let's suppose currently I am, let's suppose, a senior software engineer in backend. So have I started as a software engineer in backend? No, answer is no, I have not. From why, what I've started as an analyst, or generally my career started in 2022 as a, let's suppose, business operation executive. I was a business operation executive, then I become software analyst, then I come to here, I become MTS, then mentor, then software engineer. Now as a senior software engineer, I'm working in mentoring, faculty development program, corporate training. That's called incremental process. So you start, let's suppose you are making a to-do application. If you are making a to-do application, do we require, let's suppose, MongoDB for that? Do we require MongoDB for that? Answer is no. We do not require MongoDB. We can use local storage. Local storage we can use. We can use IndexedDB. Let's suppose if we are using a simple CRUD operation, do we require AWS S3 bucket? No, we don't require it. If we want to send only 10 mail, do we require Amazon SES? No, we don't require Amazon SES or AWS SES. We can use NodeMailer, we can use Twilio, we can use Mailhog as well. That means whatever the requirement, every company, every product started from this much code, just an idea. Then we recycle it, we increment it on the phases one, phases two, phases three, and we start implementing new features as we go on the journey. We receive feedback, okay, 10,000 users coming now, we'll be requiring Redux. 10, a few more, I will be requiring, I suppose, just 10. I will be requiring backend as service. I'll be requiring rate limiting. So you cannot directly build all the requirement in single platform or single update, or you cannot roll out it. You will move it, you will be releasing your product as simple, you can say, code. Then you will receive the feedback, you will break your code, you will handle multiple failure. Then you will be getting the idea that what needs to be done. And that's what the beauty of software, that is called software life cycle. Have you heard about SDLC, Software Development Life Cycle? So let me just, for your doubt, let me just give it. Have you heard about a waterfall model of SDLC? Everyone have heard classical waterfall. Like in software engineering, there's a good go-to concept of SDLC. It's a few model: classical waterfall, iterative waterfall, prototype model, B model. You can say spiral model, radial. These are the few models that we studied in software engineering, right? So what do you mean by classical waterfall? There's a few, let's suppose, stages of application. First, I will do requirement gathering. Okay. Then I'll use planning and execution. I'll code, I'll test, I'll deploy, and I'll maintain. These are the process. But in classical waterfall, there is no reverse back. You cannot repeat. There is no iteration going back. You have to plan from requirement to the maintenance in one go. That is known as waterfall. And there is a one more methodology that is known as agile. Why do we prefer agile? Agile is something, rather than planning your whole journey of product in one go, you have to plan in a sprint. First sprint, second sprint, third sprint, fourth sprint. And rather than releasing all of your feature in single go, you will release your product based on the feedback or based on certain requirement on phases wise. That is called agile methodology. Why agile is preferred? Because it will give you a risk management, it will give you a, you can say, change in requirement flexibility. If your user is changing the requirement in between, you can cope up in next phase. And there's a one more model that is known as spiral model. What is spiral model? Requirement gathering, coding, prototype or testing, and then let's suppose you are providing feedback, or let's suppose testing is there. We are doing this is a spiral model. Why spiral model is, you can say, very efficient when it comes to software engineering? Because of every phase of the product is repeated after a certain amount of time. So let's suppose I gathered some requirement, I designed it, made a prototype, test it. But this is something, that's where some feedback came into picture. The user said that something is wrong. So in the next cycle of the requirement gathering, I can consider this feedback as a requirement for the next phase, and I can design it, I can make a prototype, I can again test it. That means every feedback that I'm receiving in certain cycle can be taken as a requirement for the next cycle. So I cannot satisfy all the needs in single, you can say, iteration. You have to keep iterating until you are not achieving your goal. And that's what updates looks like. So every time you are receiving update,
there are some bug fixes, there are some patch fixes is there. So that's how software life cycle works, right? So whenever it comes to code splitting is also something like this key. Rather than designing your whole phenomena at once or in one component, you can divide that into a multiple component, and now you can bundle them together when you want to render into a single component. Now the problem is, who will bundle my component? Who will bundle my component? The answer is simple. Bundling of the component can be taken up by the backpacks, your beat, your backpack bundler, that's what you are using. They can bundle your component in a single piece app.jsx, or let's suppose home.jsx, and you can render it, right? This is code splitting and lazy loading looks like. And whenever you want to use few more technique into, let's suppose, memorization and optimization, so that thing can also be used. But let's suppose I want to teach you one few more concept. There is a very theoretically concept. I will give you also the code. Okay. Now, have you heard about two terms, debounce and throttle? These are very important two questions that will be asked in even JavaScript interviews or React interviews. You have to make a hook, use debounce, or use throttle, or simple JavaScript debounce and throttle. Have you heard about this concept, debounce and throttle? Hmm? Anyone? Everyone, just give me a yes or no. It will be very easy because I should know, okay, what I'm getting into, right? Because if you understand, I will just give a let's understand. Let's assume you don't understand debounce and throttle. So because this is one of the, you can say, peak optimization technique when it comes to making search engine, or you can say search bar, infinite scroll, those kind of machine coding round component, these debounce and throttle come into picture. So this is the one thing. Let me just take. Whenever you have tried to understand one thing, this is known as the cycle of an API. This is a cycle of an API. Okay. This is known as a response. This is known as request. Okay. Now, let's suppose I am writing a function, okay, which is going to take a query from me, and it is going to search for that query, simple. And it take, let's suppose, 300 millisecond to complete one query or to search one query. So what I will say to a user, ki the moment you call my function to search something, you need to wait 300 millisecond in order to get your output. Yes. So when I start a timer of 300 millisecond, I will start searching the query. Lekin the moment that might be the scenario ki I was in between, I was just in middle, and user changed the query. Let's suppose user called this function again with a different query. Let's suppose some different query. My query had changed, my input had changed. So what will I do? Should I continue searching for the first query? Answer is no. Because every time user hit a keystroke, I cannot run my function, I cannot run my API call on each and every keystroke. So what is the correct method in this scenario? Correct method is we need to wait for certain amount of time. So user stop typing or user stop giving me input, then I will be moving forward with the API call. And this happens in search engine, or you can say your DOM length calculation or your scroll behavior. So whenever you stop typing, whenever you stop scrolling, then your output comes into picture. It is not something like that you are typing because the B and B will be there. No, you types everything. That's when API calls get hit. So that is known as debounce. So what will happen if you change the particular API? Nothing will happen. It will come down again. It will stop your execution. It will say, and it will say, ki, okay, I told you ki you have to wait 300 millisecond and you didn't. So now you have to call my function. I have to start the
call again, and now you have to again wait for 300 millisecond in order to get your output. So I will take this input as a output, or let's suppose my search query, I will go again for searching. Or let's suppose I was about to reach, just about to reach to the, let's suppose, response, and user again changed the query. Simple. So what I'll do, I'll say ki you didn't listen to me properly. I said ki you have to wait 300 millisecond in order to get your output. Right? So after that, I will reset the timer to 300 millisecond again, and I will go back. And if the user is not changing the input again, I will reach to the response. That means this is where your request gets served. So whenever you are writing any function which is like that, which will take a delay of certain amount of time, and until unless you are not stop typing the particular, let's suppose for that particular amount of time, your request will not be processed. And this is known as debounce search. Now on the other hand, but the problem is user can still call your function, and you have to do again and again reset of the timer. That will give the flexibility to the user but the complexity to your system. So debounce is a good option to lose traffic, to have a, let's suppose, a flexibility over search key. Let's user stop it first. When user stop typing or user stop doing certain action, then I will perform. That means पहले आप कर लो भाई पूरा टाइप, उसके बाद, राइट, कि अगर ऐसा करते हैं तो होगा क्या? ऐसा करने से होगा क्या कि हम यूजर के हर एक की प्रेस पे, हर एक की चेंज पे अपना एपीआई कॉल नहीं करेंगे, तो मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा. तो फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्ट में डिबाउंस यूज होता है. नेक्स्ट जेएस में भी डिबाउंस यूज कर सकते हो आप, व्यू में भी डिबाउंस यूज कर सकते हो, किसी में भी. डिबाउंस एक टेक्निक है जो एपीआई रिलेटेड होती है, कि जब भी आपको एपीआई को थोड़ा हेल्दी रखना है, यू विल यूज दोस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. But on the other hand, there is one more technique to limit the number of requests on the platform, is known as throttle. And throttle क्या कहता है? Throttle कहता है कि debounce अभी भी आपको क्या कर रहा है? Debounce अभी भी आपको flexibility दे रहा है कि आप function call कर सकते हो. तो हम क्या करते हैं, ये functionality, ये जो flexibility, इसको kill कर देते हैं. अब ये कैसे होता है? मान लो ये request था, ये response रहा. अब मैंने कहा कि ये तुम्हारा response cycle है और ये तुम्हारा request cycle है. और मैंने कहा मान लेते मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है सर्च, जो एक क्वेरी लेता है, और मैंने एक टाइमर ऑल्सो दे दिया कि ये 300 मिली सेकेंड का टाइम लेता है एक रिक्वेस्ट को सर्व करने में. तो थ्रॉटल बेसिकली क्या कहता है कि मैं डिबाउंस के जैसा नहीं हूं कि यूजर टाइप करेगा, बंद करेगा टाइप करना, तभी मैं जाके सर्च करूंगा. नहीं, मैं थोड़ा अलग हूं. मैं क्या कर सकता हूं, मैं करूंगा कि मैं हर 300 मिली सेकेंड के बाद अपना फंक्शन ऑटोमेटिकली रन करूंगा. अब उसकी बेला, सपोज मैंने पहली बार एक फंक्शन चला दिया, अब मैं अगला जो फंक्शन है वो 300 मिली सेकेंड बाद चलाऊंगा. दैट मीन्स अगली कॉल 300 मिली सेकेंड बाद होगी, फिर उसके 300 मिली सेकेंड बाद, फिर उसके 300 मिली सेकेंड बाद. बट द प्रॉब्लम इज कि इस टाइम के बीच में अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट लगाता है तो हम क्या करेंगे? हम उसको इग्नोर कर देंगे. कि मेरा सिंपल रूल है कि मैं हर 300 मिली सेकेंड के बाद एक रिक्वेस्ट लगाने वाला हूं, आप चाहे कुछ भी कर लो. बट द प्रॉब्लम इज अगर उसके बीच में कोई यूजर रिक्वेस्ट लगा देता है तो मैं उस रिक्वेस्ट को क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा. कहूंगा कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो 300 मिली सेकेंड बाद अगली टाइम चलेगा. दैट मीन्स एक फंक्शन जो खुद से डिसाइड करता है कि उसे कब चलना है. तो अगर मैंने कहा कि मेरी एक एपीआई कॉल ना हर 30 मिनट में होगी, दैट मीन्स एक घंटे में मैं सिर्फ 2 बार वो एपीआई कॉल करूंगा. That means what I'm doing, I'm limiting my user to come onto my, you can say, system, and that is known as rate limiting. I can restrict a user and I can restrict the traffic coming onto my server whenever I want. And how we can do it? We can throttle it. Throttle means कि मैं decide करूंगा कि एक certain function कितने amount के बाद अपने आप की साइकिल को रिपीट करेगा. तो मैंने कहा मान लेते हैं कि अगर ये 300 मिली सेकेंड मैंने टाइम दिया, तो ये फंक्शन 300 मिली सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली कॉल होगा. बट प्रॉब्लम अभी भी वही है कि इसके बीच में अगर कोई यूजर टाइप कर देता है कुछ, जो कि हम डिबाउंस में कर रहे थे, तो डिबाउंस में हम क्या करते थे? डिबाउंस में हम तो उस 300 मिली सेकेंड का टाइमर दोबारा रीसेट कर देते थे कि चलो यार तुमने दोबारा से इनपुट चेंज कर दिया, तो आई विल रीसेट द टाइमर अगेन एंड यू हैव टू वेट फॉर 300 मिली सेकेंड मोर इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कहेंगे ठीक है उसे चिल्लाने दो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर यूजर कुछ टाइप कर रहा है तो लेट हिम टाइप, कोई मतलब नहीं है. आई विल ब्लॉक इट्स रिस्पॉन्स, आई विल इग्नोर इट्स रिक्वेस्ट. और ये सबसे अच्छा देखने को मिलता है आपके यूट्यूब कमेंट्स में.
कभी भी आप स्ट्रीम कर रहे होते हैं, अगर एक बार कमेंट करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट कमेंट के लिए जो कमेंट सेक्शन है वो डिसेबल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, राइट? इसीलिए क्योंकि आप स्पैम से बच सकें, क्योंकि आपका जो एपीआई गेटवे है, आपका जो लेट्स सपोज एक एंड पॉइंट है, वो इतने ज्यादा ट्रैफिक को इतना ज्यादा कैपेबल अगर नहीं है, एक साथ कई सारी रिक्वेस्ट कई सारा ट्रैफिक हैंडल कर पाए, तो आपका सिस्टम क्रैश होगा फॉर श्योर, आपका सिस्टम डाउन जाएगा। तो उस ऑर्डर में क्या करते हैं, हम अपने सर्वर पे आने वाली या अपने एंड पॉइंट पे आने वाली नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को ही लिमिट कर देते हैं इन 1 मिनट या 1 आवर, कि कितनी रिक्वेस्ट में एक बार प्रोसेस करूंगा, रेस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट कैन बी इग्नोर। इससे मैं डॉस से भी बच सकता हूँ, डिनायल से, जैसे डीडॉस अटैक होता है, इस टाइप के हैवी ड्यूटी ट्रैफिक रिक्वेस्ट या ट्रैफिक अटैक से बच सकता हूँ, जिससे मेरे सर्वर के डाउन जाने की कैपेबिलिटी कम रहती है, राइट? तो हमने देख लिया कि भाई लेजी लोडिंग किसे कहते हैं, कोड स्प्लिटिंग किसे कहते हैं, डिबाउंस किसे कहते हैं, थ्रॉटल किसे कहते हैं। अब there are few more thing that I wanted to tell you। कोड स्प्लिटिंग में एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूल फेडरेशन और शेल ऐप। हैव यू हर्ड अबाउट अ शेल ऐप? जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ओके? ओके, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि अगर इसके अलावा मैं कोई थोड़ी सी बात करूं, उसे कहते हैं शेल ऐप। सिस्टम डिजाइन में एक और कॉन्सेप्ट होता है जो शेल ऐप होता है। शेल ऐप समझने के लिए आपको एक चीज पहले और समझनी पड़ेगी, इसको कहते हैं थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से, प्रॉक्सीज किसे कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉक्सीज देयर, रिवर्स प्रॉक्सी एंड फॉरवर्ड प्रॉक्सी। मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूजर है जो इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है? एक यूजर है जो इंडिया में बैठा हुआ है, उसको एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, मान मान लेते हैं कि एक्सेस करनी है जो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट है। मान उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वीपीएन। और वीपीएन क्या करता है, आपको एक रिमोट लोकेशन देता है। लेट्स सपोज यू आर कनेक्टेड टू, लेट्स सपोज अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के सर्वर से आप कनेक्टेड है, और मान लेते हैं ये वाला आपका जो सर्वर है जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं, तो अब आप डायरेक्टली अपना आईपी या अपना एड्रेस एक्सपोज नहीं कर रहे हैं इस सर्वर को, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी अगर इफ यू विल एक्सपोज, इफ यू विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सिस्टम विल रिजेक्ट इट, बिकॉज you are not a valid user, you are not allowed to access that website. So what I will do, I will take a virtual network, virtual private network, and I will ask this network to connect on the behalf of me rather than me connecting directly to this system. ना अब ये सिस्टम कैसा दिख रहा है कि अब मेरे बी सिस्टम को कभी पता नहीं लगेगा कि ये सिस्टम या ये रिक्वेस्ट इंडिया से आ रही है। उसे पता है कि ये सिस्टम, ये रिक्वेस्ट आ रही है अर्जेंटीना से, और वो अर्जेंटीना का जो वेबसाइट अलाउड है या वो कंटेंट अलाउड है, वो मुझे यहाँ पे सर्व करेगा वो कंटेंट, और मैं यहाँ से इसको रिसीव कर लूंगा। सो व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इन दिस सिनेरियो, मैं कुछ नहीं, मैं अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ। जब भी आप अपने सर्वर से अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी छुपाते हैं बाया अ बीपीएन और बाया अ प्रॉक्सी, इट इज नोन एज फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। कि वी आर whenever we want to hide our client's identity from the servers, कि सर्वर को नहीं पता है कि ये एक्चुअली रिक्वेस्ट आ कहां से रही है, तो जब इस केसेस में हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड,
जब भी मुझे अपने सर्वर की आइडेंटिटी छुपानी हो तो तब हम यूज करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। वो कैसे? मान लेते हैं कि मैंने एक सिस्टम बना रखा है, मान लेते हैं Amazon। डू यू नो कि जो Amazon है उसका पेमेंट जो गेटवे है या पेमेंट प्रोटोकॉल जो है वो कहीं दूसरे एड्रेस पे होस्ट हो रखा है। क्या आपको पता है वो एड्रेस कहाँ है? यू डोंट नो। व्हाट एक्चुअली यू इंटरेक्ट टू amazon.com। अब उसके पास पेमेंट है, लेट्स सपोज उसके पास एक ऑर्डर सर्विस भी है, उसके पास लेट्स सपोज एक ईमेल सर्विसेज भी है, तमाम तरीके की सर्विसेज हैं। बट हम मुझे नहीं पता है वो एक्चुअली किस एड्रेस पे पड़ी हुई है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, amazon.com पे जाता हूँ और amazon.com पे बोलता हूँ कि मुझे पेमेंट पे ले जाओ, मुझे ऑर्डर पे ले जाओ, या मुझे ईमेल पे लेके जाओ, या अकाउंट पे लेके जाओ। अब ये होता है कि जब आप अपने एक्चुअल सर्विस की आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं क्लाइंट से, तब आप यूज करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। अब रिवर्स प्रॉक्सी के टाइम पे आपको एक सेल ऐप की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक शेल कंपनी। हैव यू हर्ड अबाउट शेल कंपनी? आपने मूवी में देख रखा होगा कि जो ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो शेल कंपनी के थ्रू होती है, कि जो विलन होता है वो शेल कंपनी खोल लेता है किसी दूसरे कंट्री में, वहां से पैसे को लॉन्डर करता रहता है। देखा होगा ना मूवी में। अब उससे हो क्या रहा है, मैं एक्चुअली में किसकी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ? एक्चुअली में मैं मेन सर्विस की आइडेंटिटी छुपा रहा हूं वाया अ शेल ऐप। अब शेल ऐप काम कब आता है, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मेरे पास एक पॉली रेपो या मोनो रेपो आर्किटेक्चर है जिसमें मल्टीपल सर्विसेज पड़ी हुई हैं। एक मेरे पास गिटहब रेपोजिटरी जिसमें मैंने सारी सर्विसेज रख रखी हैं, ईमेल, ऑर्डर, पेमेंट, सारी सर्विसेज। एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ टाइम बाद ये सर्विस बहुत हार्ड हो जाएंगी टू मेंटेन, क्योंकि ये सर्विस दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, कोड साइज में, बंडल साइज में, और सर्विस साइज में, और ट्रैफिक साइज में। तो रेदर देन इसको मैं एक सिंपल सर्विस बोल के, कि हम इसको सिर्फ सर्विस नहीं बोलेंगे, इसको हम एक सेपरेट ऐप बना देंगे। इसका नाम हो जाएगा ऑर्डर ऐप, इसका नाम हो जाएगा पेमेंट ऐप, इसका नाम हो जाएगा अकाउंट ऐप, लेट्स सपोज, और ईमेल ऐप। दैट मींस ये वाला जो ऐप है ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे होस्टेड होगा। इसको तुम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह भी देख सकते हो, कि जब आपका मोनो रेपो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है टू मेंटेन, आप शिफ्ट कर जाते हैं किसमें, पॉली रेपो आर्किटेक्चर में या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो मैंने कहा कि मैंने इन सबको एक अलग अलग ऐप बना दिया, और जब भी मैंने इनको अलग ऐप बना दिया तो इनको इकट्ठा रखने के लिए मेरे पास एक जगह होनी चाहिए। अब उस जगह को मैंने, इन कॉम्बिनेशन को एक मैंने बिल्कुल सेल यानी कि खोखले जगह में रख दिया, और उसका नाम मैं रख दिया amazon.com। एंड ईच एंड एवरी सर्विस इज कनेक्टेड टू दिस सेल ऐप। मेरा यूजर आता है यहाँ पे और ये इस गेटवे पे हिट करता है, और गेटवे से मैं डिसाइड करता हूँ कि आपको जाना कहाँ है, कि भाई आपको पेमेंट पे जाना है, आप पेमेंट के लिए ऑथराइज हैं कि नहीं है। ये चेक करके हम एक्चुअल लोकेशन पे उनको भेजते रहते हैं, उस सर्विस के पास भेजते रहते हैं। और मेरे कंज्यूमर को कुछ पता नहीं होता कि एक्चुअली ये वाली सर्विस कहाँ लाए कर रही है, पेमेंट किधर है, अकाउंट किधर है, ऑर्डर किधर है। तो इससे मैं क्या एक्चुअली हाइड कर पा रहा हूँ, मैं अपने सर्वर की आइडेंटिटी हाइड कर पा रहा हूँ। इस केस में इसको कहा जाता है रिवर्स प्रॉक्सी। और रिवर्स प्रॉक्सी जब भी एक एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का सहारा लेती है, जस्ट टू हाइड योर ऑल पॉलीरेपो आर्किटेक्चर, इसको हम लोग कहते हैं शेल ऐप। ओके, शेल ऐप is just an entity that hold your multiple services together in order to give you a proxy layer that is known as reverse proxy, राइट। उसके बाद आप कई टाइप की मेमोराइजेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, पिछले सेशन में मैंने बात किया था यूज मेमो, यूज कॉलबैक के बारे में। अब मैं एक बार दोबारा से उसको बता देता हूँ कि कई हुक होते हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हुक भी होते हैं, मेमोराइजेशन हुक भी होते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है जो एक बहुत ही बड़ी एपीआई को हिट करता है, और मुझे लेट सपोज 3000 प्रोडक्ट का डेटा ला के देता है, 3000 प्रोडक्ट का डेटा ला के देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी एक स्टेट चेंज होगी तो ये वाली एपीआई कॉल दोबारा दोबारा करने का कोई सेंस बनता नहीं है। मान लो मैंने एक बार प्रोडक्ट लोड कर लिया 3000 प्रोडक्ट, क्या अगली बार जब मैं एपीआई कॉल हिट करूंगा क्या ये प्रोडक्ट चेंज होंगे? आंसर इज नो। क्यों ही चेंज होंगे? क्योंकि चाहे मैं एक बार हिट करूं एपीआई, चाहे मैं 10,000 बार हिट करूं, अगर ये 3000 प्रोडक्ट है तो ये 3000 प्रोडक्ट ही रहेंगे। इन ऑर्डर में सिर्फ बार बार इस एपीआई कॉल को करना बहुत ही बेकार होता है, और परफॉर्मेंस ओवरकिल होता है, कि आप खाम खाम अपने सर्वर पे एफिशिएंसी लूज कर रहे हैं, आप एफिशिएंसी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि डेटा तो चेंज नहीं होने वाला है। इस केसेस में हम क्या यूज करते हैं, इस केसेस में हम मेमोराइजेशन यूज करते हैं, कि हम एक यूज मेमो नाम का हुक रखते हैं, कि जो कि इस फंक्शन से आने वाली वैल्यू को मेमोराइज कर लेता है। मान लेते हैं उसने तीनों 3000 प्रोडक्ट मेमोराइज कर लिए हैं, जब तक इस फंक्शन की डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी, लेट्स सपोज डिपेंडेंसी इज यूआरएल,
दैट मीन जब तक ये एपीआई चेंज नहीं होगी ये फंक्शन दोबारा कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक एपीआई सेम है तो आउटपुट भी सेम आएगा। तो ये जस्ट लाइक कि अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज 3 into 3, यू विल से 9। तुम्हें कैसे पता कि ये 9 होता है? हाउ डू यू नो कि 3 into 3 is 9? बिकॉज आपको ये याद है। क्या आपको अब इसको दोबारा डू यू हैव टू कैलकुलेट दिस 3 into 3 अगेन एंड अगेन? आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट बिकॉज इट्स ऑन योर रिफ्लेक्स कि आपने इसको मल्टीपल टाइम देख रखा है। यू नो कि 3 into 3 हमेशा 9 ही होता है, तो चाहे हम एक बार पेन चलाएं, चाहे 2 बार या 10 बार, 3 into 3 तो 9 ही होने वाला है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं तुमसे पूछ लूं 2 की पावर 106 कितना होता है, तब अगर मैं पूछ लूं 2 की पावर 106 कितना होता है, आप कहोगे ये तो यही याद है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू चेंज होगी तब तब आपको वो फंक्शन दोबारा रन करना है, अदरवाइज आपको वो फंक्शन दोबारा रन नहीं करना है। अब अगर मैं ये 3 into 3 दोबारा तुमसे पूछ लूं, तुम फिर से कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप डायरेक्टली बोल दोगे 9 है। बट अगर मैं 3 into 3 किसी बच्चे से पूछूं जिसको कैलकुलेशन आते ही नहीं, इसने कभी देखा ही नहीं है 3 into 3, वो क्या करेगा? वो सर्वर पे जाएगा, वो लॉजिक चलाएगा 3 into 3, तब वो कैलकुलेट करेगा 9। लेकिन हाउ विल यू रिएक्ट इफ आई आस्क आफ्टर 15 मिनट टू दिस चाइल्ड कि व्हाट इज 3 into 3? अब वो स्टार्ट कर देता है वापस कैलकुलेशन करना। आप कहोगे बेवकूफ हो क्या, 3 into 3 अभी तो तुमने बताया कि तुम इसको याद नहीं रख सकते थे क्या? दिमाग में रख लो कि 3 into 3 जब भी कोई पूछे 9 होता है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट योर मेमोराइजेशन लुक्स लाइक। अगर आप एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, अगर आप एक फंक्शन रन कर रहे हैं और फंक्शन का रिजल्ट सेम हो रहा है हर बार, तो रेदर देन कैलकुलेटिंग इट अगेन एंड अगेन, आप उस फंक्शन की वैल्यू को कैश कर लीजिए। इसे हम इसके लिए हम कहते हैं मेमोराइजेशन। और मेमोराइजेशन 3 चीजों का किया जा सकता है। आप फंक्शन से आने वाले रिजल्ट को मेमोराइज कर सकते हैं, आप एक कंपोनेंट को मेमोराइज कर सकते हैं, आप एक पूरे के पूरे फंक्शन डेफिनेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। तो जब भी आपको फंक्शन से आने वाले आउटपुट को मेमोराइज करना होता है, ध्यान से सुनना, तब आप यूज करते हैं यूज मेमो। दिस इज अ हुक, यूज मेमो। और जब भी आपको कंपोनेंट मेमोराइज करना होता है, यानी कि पूरा का पूरा कंपोनेंट अगर आपको मेमोराइज करना है, तब आप यूज करते हैं एक मेमो हुक और रिएक्ट डॉट मेमो। डायरेक्टली यूज करना चाहो तो रिएक्ट डॉट मेमो में रैप कर दो कंपोनेंट, अगर वैसे चाहो तो मेमो यूज कर लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप एक कंपोनेंट में प्रॉप्स पास कर रहे होते हैं, और प्रॉप्स वो फंक्शन होता है, यानी कि देयर माइट बी चांसेस कि जब जो भी आप प्रॉप्स पास कर रहे हैं अपने सिस्टम में, वो प्रॉप्स एक फंक्शन है। और फंक्शन एक फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है कि जितने बार आप फंक्शन को लोड करेंगे दोबारा, तो क्या होगा, फंक्शन रिक्रिएट होगा, उसे हीप मेमोरी में नया एड्रेस मिलेगा, नया रेफरेंस मिलेगा, तो प्रॉप्स में चेंज डिटेक्ट होगा, और प्रॉप्स में अगर चेंज डिटेक्ट होगा तो आपका कंपोनेंट फिर से री-रेंडर करने लग जाएगा। जब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है किसी भी फ्रंट एंड कंपोनेंट के अंदर, कि आपका कंपोनेंट एक प्रॉप्स के चेंज होने पे, जो कि असल में चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉप्स क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि प्रॉप्स में तो फंक्शन है, और फंक्शन मैंने एक बार लिया, मान लेते फंक्शन पहली बार मेरे पास आया, उसका एड्रेस था 1 2 3 4, और मेरा जो दूसरा कंपोनेंट जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था मेरे कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए, उसने उस कंपोनेंट को रिलोड किया, तो ये फंक्शन दोबारा बनेगा। अब फंक्शन का एड्रेस मान लेते हो गया 2367 हीप मेमोरी में। तो फंक्शन तो सेम ही है ना, फंक्शन इज स्टिल सेम, डेफिनेशन इज सेम, बट व्हाट इज हैपनिंग, योर ओनली रेफरेंस हैज बीन चेंज्ड। सो मेरे कंपोनेंट, मान लो ये मेरा एक कंपोनेंट है जो कि इस फंक्शन को रिक्रिएट करता है, फंक्शन को होल्ड करता है। पहली बार इसे क्या मिलेगा, प्रॉप्स में इसका रेफरेंस, तो इसे लगेगा 1 2 3 4 एक रेफरेंस, एक फंक्शन है, कोई बात नहीं, मैं पहली बार लोड हो जाऊंगा। लेकिन दोबारा सेम फंक्शन एक नए एड्रेस से आएगा, तो मेरा ये कंपोनेंट कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि इट्स अ सेम फंक्शन। उसे हमेशा ये लगेगा कि एक नया फंक्शन है, क्योंकि एक नया एड्रेस पास हुआ है। तो जब भी किसी प्रॉप्स में चेंज होता है, ये कंपोनेंट अपने आप को क्या करेगा, रिलोड करेगा। बट एक्चुअली में कैसे रिलोड करने की रिक्वायरमेंट थी? आंसर इज नो, it should not have reloaded the component because function was the same but only the address was changed। तो जब भी आपको इस टाइप की चीजों में कंपैरिजन करना होता है कि आपको फंक्शन का जो क्रिएशन होता है वो सिर्फ पहली बार रखना है, उसके बाद उसको क्रिएट ही नहीं करना है दोबारा, यानी कि जब आपकी फंक्शन की क्रिएशन को फ्रीज करना होता है तब आप यूज करते हैं। जब आपको फंक्शन ही फ्रीज करना होता है तब आप यूज करते हैं वन ऑफ द लेजेंडरी दैट इज नोन एज यूज कॉल बैक। सुना है यूज कॉल बैक के बारे में? एवरीवन हैव हर्ड दिस, जिसने भी रिएक्ट के साथ काम किया होगा दे हैव हर्ड इट, द यूज कॉल बैक। बट क्या यूज कॉलबैक और यूज मेमो सेम है? क्या लगता है, क्या यूज मेमो और यूज कॉलबैक सेम है? आंसर इज यस, बोथ आर सेम।
बट दोनों के तरीके में अंतर है कि भाई पहला वाला जो यूज मेमो फंक्शन है वो फंक्शन से आने वाले रिजल्ट को कैश करता है, और जो कॉल बैक है वो जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंशन है जो कि पूरे के पूरे फंक्शन के डेफिनेशन को ही मेमोराइज कर लेता है। यानी कि अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है बार बार, तो मैं क्या यूज करूंगा, यूज मेमो में रख लूंगा। और हो सकता है फंक्शन बार बार बन रहा है तो मैं उसे यूज कॉल बैक के अंदर रख लूंगा। तो अगर आप कभी भी रिएक्ट के अंदर ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा यूज मेमो कैसे लिखा जाता है, एक फंक्शन पास करना होता है आपको उसके अंदर, और एक डिपेंडेंसी एरे पास करना होता है। जब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड यूजिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर विद यूज कॉल बैक, यूज कॉल बैक ये भी क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी लेता है। जब आप इसको कंपोनेंट को इस स्टेटमेंट को चलाएंगे, आंसर आएगा ट्रू, राइट। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू। कि भाई हाँ, कि दे आर सेम, और ऑब्वियसली दे आर सेम। व्हाई दे आर सेम? बिकॉज यूज मेमो इज फॉर मेमोराइजेशन, यूज कॉलबैक इज आल्सो फॉर मेमोराइजेशन। बट वो मेमोराइज क्या करते हैं, मेमोराइज करने के तरीके थोड़े से अलग हैं। क्या मेमोराइज करते हैं, एक मेमोराइज करता है फंक्शन से आने वाले रिजल्ट को, दूसरा मेमोराइज करता है पूरे के पूरे फंक्शन को। तो हम लोगों ने कई टेक्निक समझ ली, जैसे कि आपको कभी देखना पड़ जाए कि भाई डिबाउंस क्या होता है, थ्रॉटल किसे कहते हैं, कोड स्प्लिटिंग क्या है, लेजी लोडिंग क्या है, और लेजी सस्पेंस किसे कहते हैं, और लेकिन से रिवर्स प्रॉक्सी फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या है, या सेल ऐप किसे कहते हैं, मॉड्यूल फेडरेशन क्या है, राइट, और कंपोनेंट लोडिंग किसे कहते हैं, यूज मेमो क्या है, रिएक्ट मेमो क्या है, यूज कॉलबैक क्या है। बट थोड़ी सी चीज और बता देता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं ना, हम अपने कंपोनेंट की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो कई बार इतने सारे कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व ही नहीं कर रही होती है। जस्ट अ क्लोजिंग स्टेटमेंट कि मैंने इतनी सारी जो टेक्निक डिस्कस कर ली है पिछले 1 घंटे में, ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। इसके अलावा भी कई टेक्निक्स लाई करती हैं जो आप सीख सकते हैं टाइम के साथ, और जो कि मैं आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि अभी आई डू नॉट वांट टू डंप ऑल द थिंग्स इन वन सेशन, जो इससे आपको ओवरवेलमिंग हो सकता है। आई विल कीप इंक्रीजिंग द सिस्टम डिजाइन लेवल इन अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल, बिकॉज अभी लेक्चर्स काफी बचे हुए हैं इस सीरीज में। तो मैं ये सिंपली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी टेक्निक हमने ये 8-10 टेक्निक डिस्कस करी हैं, ये टेक्निक जरूरी नहीं है कि एक एप्लीकेशन में सारी की सारी आप अप्लाई कर दें, और कई बार इनकी रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है इतनी ज्यादा लेवल पे। हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है छोटे कॉमन सेंस की। लाइक अगर मैंने आपसे कहा कि कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, मान लो आप इमेज यूज कर रहे हैं। जनरली आप क्या यूज करते हैं, इमेजेस आप लगाते हैं, बैकग्राउंड्स आप लगाते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में या नेक्स्ट एप्लीकेशन में या व्यू एप्लीकेशन में। आप एसेट के अंदर डाल देते हैं पीएनजी जेपैग इमेज, जेपीजी इमेज, जेपीजी इमेज, पीएनजी इमेज। This is not a good way, you can say, to add the images. आप आइदर सीडीएन से सर्व करिए, पर सीडीएन भी बहुत यू कैन से कई बार थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आप ट्राई करिए। एक फॉर्मेट होता है, हैव यू हर्ड अबाउट एबाइफ फॉर्मेट, एबीआईएफ फॉर्मेट? ये काफी पॉपुलर फॉर्मेट है इन ऑर्डर इन नेक्स्ट और रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क्स। जब भी आप इमेज यूज कर रहे हैं बाई फॉर्मेट में इमेज यूज करिए, जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम बंडल साइज की होती हैं और ज्यादा ऑप्टिमाइज होती हैं फॉर रिएक्ट एंड नेक्स्ट फ्रेमवर्क, राइट। सीडीएन आप यूज कर सकते हैं, वीडियोस के जो फॉर्मेट होते हैं वो इस टाइप के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। और जो फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी आप कंपोनेंट बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कंपोनेंट जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा बेटर है। अब उसी के लिए आपके हुक काम आते हैं, राइट। हुक क्या करता है, हुक आपके लॉजिक रिपीटिशन को थोड़ा यू कैन से आसान बना देता है, और फंक्शन का काम ही तो यही होता है। if you say why we require function in the first place, function is having only one you can say motive, कि whenever you want to repeat certain kind of logic, you don't have to write it again, you can directly write one time। function का definition क्या होता है, write one time use anywhere, right। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ कि let me एक छोटी सी चीज तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, मुझे एक बार वो खोलने दो मेरा VS को, फिर मैं तुम्हें बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ। एक हुक लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, जो मैं शायद पहले दिखा चुका हूँ कुछ पिछले वाले सेशन में मैंने तुम्हें दिखाया था, बट इफ यू डोंट रिमेम्बर इट, नो वरीज, आई विल जस्ट शो यू।
ये वाला एक बार तो मैं हुक दिखाता हूँ कि सिंपली हुक का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक सिंपल सा कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें मैं लेट्स सपोज एक फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, इसको यूज डिबाउंस कहते हैं, ठीक है। कि अगर मैं डिबाउंस हुक लिखूं वो कैसा दिखेगा, और लेट्स सपोज उसका यूज क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये रहा मेरा डिबाउंस हुक। मैं एक थोड़ा सा तुम्हें फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, फंक्शन का नाम होगा डिबाउंस, और यहीं पे लिख लेता हूँ, ऐप के नीचे यहीं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। लेट सपोज मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है डिबाउंस, और इसका नाम रख देते हैं यूज डिबाउंस या यूज डिबाउंस। ओके। अब ये रिसीव क्या करता है यूज डिबाउंस? ऑब्वियस सी बात है, एक वैल्यू रिसीव करेगा, यानी एक फंक्शन रिसीव करेगा, और सिंपल सा डिले रिसीव करेगा कि हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू प्रोसेस दिस, राइट। नाउ आफ्टर दैट, देखो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो एक बार तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो इस चीज को, कि भाई यूज डिबाउंस क्या किया है कि एक स्टेट लेगा, उसके बाद एक यूज इफेक्ट कॉल करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम में उस फंक्शन को कॉल लगा देगा, ठीक है। अब उस डिले तक, और उसके बाद आने वाला जो एप्लीकेशन है और आने वाली जो स्टेट उसको क्लियर भी कर देगा, क्योंकि इसका नाम होता है क्लीन अप फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? इसको क्लीन अप कोड कहते हैं, ठीक है। कि जो भी आपने रायता फैलाया है, जो भी आपने चीजें बिगाड़ी हैं, वो अपना जो क्लीनिंग है वो कर देता है। एंड ये जो पर्टिकुलर टाइम है, अब यहाँ देखना यूज इफेक्ट के अंदर मैंने दो चीजें पास करी हैं, कि वैल्यू एंड डिले एज अ फंक्शन डिपेंडेंसी। दैट मींस, अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ कि वेयर इज दिस। अब तुम एक चीज ध्यान से देखना है यहाँ पे, कि अब जो ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट में यूज इफेक्ट को देखो एक बार। अब यूज इफेक्ट क्या कर रहा है? एक हैंडलर वेरिएबल बना रहा है और सेट टाइम आउट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इस फंक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, ओके। बट अगर वो फंक्शन या वो कंपोनेंट अनमाउंट होता है, यानी कि वो फंक्शन अपनी स्क्रीन से बाहर चला जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो उसके टाइमर को क्लियर भी कर दे रहा हूं। यानी कि अगर कंपोनेंट वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं कंपोनेंट अनमाउंट करके उसके टाइमर को क्लियर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो सेट टाइम आउट होता है मुझे रिटर्न करता है एक टाइमर आईडी। और मेमोरी यूटिलाइजेशन में या मेमोरी मैनेजमेंट में ये जो एप्लीकेशन होते हैं या जो ये तरीके होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने एक टाइमर लगा रखा है, तो आप उस टाइमर आईडी को क्लियर करिए, अदरवाइज आप मेमोरी लीक करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल मत लीजिए, अदरवाइज आप मेमोरी लीक करेंगे। इफी फंक्शन का यूज करिए, इवेंट्स क्लियर करते रहिए टाइम टू टाइम, राइट। और इसीलिए इफी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर चीज में। और एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जितने भी नोड जेएस के कोड होते हैं, एक्सप्रेस और नोड के जो तुम कोड चलाते हो, वो बिहाइंड द सीन किस में कन्वर्ट होते हैं? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन में, जो कि हेल्प करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, राइट। और उसके बाद आप फंक्शन की तुम डिपेंडेंसी चेक करो। फंक्शन की डिपेंडेंसी क्या है? वैल्यू एंड डिले। क्यों? क्योंकि मैंने यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, एक फंक्शन रिसीव करता है, दूसरा एक डिपेंडेंसी एरे रिसीव करता है। अब डिपेंडेंसी एरे मैंने दो चीजें डाल रखी है। पहला एक फंक्शन, यानी अगर फंक्शन चेंज हो जाए, यानी कि अगर मैं एक फंक्शन रन कर रहा हूं तो 3 सेकंड में या 3 मिली सेकंड उसको चला दो। अदरवाइज अगर वो फंक्शन ही चेंज हो जाए, तो आप दोबारा से उस फंक्शन को चलाओ, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रनिंग द सेम फंक्शन अगेन। दूसरा है डिले, कि अगर मेरा डिले चेंज हो जाए, तो अगर मैं 2 सेकंड का 3 सेकंड कर दूं, 3 से 5 कर दूं, तो सेम होता है एक एपीआई कॉल। कि अगर मैं एक एपीआई कॉल लिखूं, एपीआई को दोबारा कब चलना चाहिए? अगर मैंने एक यूज इफेक्ट में एक एपीआई डाली है, वो पहली बार कब चलेगी? जब कंपोनेंट माउंट होगा। दोबारा कब चलेगी? दोबारा तब चलेगी आइदर वो फंक्शन चेंज हो, या फिर तो वो एपीआई चेंज हो। यानी कि अगर मैं यूआरएल बदल देता हूं, तो यूआरएल बदलने के टाइम ही मेरा एपीआई कॉल दोबारा होगा। अदरवाइज हम इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं? पूरे के पूरे इस कंपोनेंट को मेमोराइज कर सकते हैं बाय राइटिंग दिस। अगर मैं इस कंपोनेंट को मेमोराइज ही करना चाहता हूं, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे यूज मेमो यूज कर लूंगा। ये रहा यूज मेमो, और इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को हम इस यूज मेमो के अंदर डाल सकते हैं, राइट। कि मैंने कंपोनेंट को मेमोराइज कर लिया है और कंपोनेंट को इस मेमोराइजेशन टेक्निक में डाल दिया। जो भी लॉजिक मैं इसके अंदर लिखूंगा, वो लॉजिक का जो वैल्यू होता है वो कैश कर लिया जाएगा। अब कैश करने से क्या होगा, कि जब भी इस कंपोनेंट की वैल्यू में जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, तब तक कि मेरा कोई भी फंक्शन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दोबारा रन नहीं करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि जब मैं इस एक प्रॉप्स में, एक सिंपल प्रॉप्स में फंक्शन पास करने लग जाऊं, जैसे कि मेरे पास एक कंपोनेंट है, अगर मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेता हूं, देखना, अगर मैं चाइल्ड कंपोनेंट बना लेता हूं, चाइल्ड डॉट जेएसएक्स RAFCE, सिंपल, और यहां लिख देता हूं कंपोनेंट रेंडर कंसोल डॉट लॉग
कंपोनेंट रेंडर्ड। अगर मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है, अब मैं इस ऐप डॉट जेएसएक्स को क्या करता हूं, यूज मेमो से मान लेते हैं, बाहर निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए सिंपल कंपोनेंट रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस कंपोनेंट में क्या करूं, एक सिंपल से ऐप की जगह पे चाइल्ड को रेंडर करा लूं, चाइल्ड को रेंडर करा देता हूं बस। अब अगर इसको तुम रन करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, चाइल्ड रेंडर्ड अगेन। बट अगर यहां पे मेरे पास एक स्टेट है सिंपल, अगर मेरे पास एक कॉन्स्ट काउंट की एक स्टेट है, लेट्स सपोज काउंट, और एक सेट काउंट है जो कि यूज स्टेट को मेंटेन करके एक काउंटर वेरिएबल चल रहा है, तो जितने बार ये काउंट चलेगा, ध्यान रखना, जितने बार ये काउंट चलेगा उतने बार ये चाइल्ड रिलोड होगा। बट द प्रॉब्लम इज चाइल्ड कोई भी प्रॉप्स यूज ही नहीं कर रहा है, तो उसे लोड क्यों करना है। तो मैं क्या करूंगा, चाइल्ड को जाके मेमोराइज कर लूंगा। चाइल्ड को मेमोराइज कैसे किया जाता है, इसको हम रैप कर देंगे मेमो के अंदर, दैट इज अ मेमो। अब मैंने मेमो के अंदर रैप कर दिया। अब क्या होगा, अब जब तक इस चाइल्ड के प्रॉप्स में कोई चेंज नहीं होगा ये कभी भी रिलोड नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम इज अगर कहीं मेरे पास एक ऐसा फंक्शन हुआ, लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन हुआ से हाई, ठीक है। अब मेरे पास ये फंक्शन है जो कि करता कुछ नहीं है, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग से हाई, लेट्स सपोज हाई प्रिंट करता है, दैट्स इट। मेरे पास एक फंक्शन है जो हाई प्रिंट करता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर चाइल्ड के अंदर ये से हाई नाम का रेफरेंस पास कर दूं, तब ध्यान से देखना, जितने बार ये काउंट चेंज होगा उतने बार ये कंपोनेंट रिलोड होगा। कंपोनेंट रिलोड होगा मतलब ये फंक्शन दोबारा बनेगा। मान लेते हैं ये फंक्शन पहली बार बना था, इसका एड्रेस था 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज 5। तो ये 1 2 3 4 5 का जो रेफरेंस है वो मैं कहां पास कर रहा हूं, इसके अंदर। तो मान लेते हैं इसकी जगह पे मैंने पास कर दिया 1 2 3 4 5, सिंपल। तो एक बार तो कंपोनेंट रिलोड हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम है कि जब मैं दोबारा काउंट बदलूंगा तो ये फंक्शन दोबारा से बनेगा, और सेम फंक्शन डेफिनेशन सेम है, कंसोल डॉट लॉग सेम है, लेकिन इसका जो एड्रेस है, लेट सपोज ये बदल जाएगा। मान लो एड्रेस अब ये हो गया, तो अब 1 2 3 4 5 की जगह अब मुझे क्या पास करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर 3 4 5 6 पास करना पड़ेगा। तो मेरे चाइल्ड को क्या लगेगा, मेरा चाइल्ड विल थिंक लाइक कि मेरे पास एक नया फंक्शन आया है क्योंकि उसका एड्रेस नया है, तो बेवजह ये कंपोनेंट अपने आप को क्या करता रहेगा, रिलोड करता रहेगा। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम रैप कर देते हैं यूज कॉल बैक के अंदर, सिंपल। अब रेदर देन डूइंग दिस मैं क्या करूंगा, const लेट्स सपोज से हाई 2 इज इक्वल टू यूज कॉल बैक, सिंपल। यूज कॉल बैक के अंदर मैं इस फंक्शन को पास कर दूंगा से हाई, और एक डिपेंडेंसी एरे पास कर दूंगा। अब इस से हाई 2 को मैं रेदर देन डूइंग दिस अब मैं इसके यहां पास कर दूंगा, सिंपल। अब क्या होगा, ये जो से हाई 2 है इसने किसका डेफिनेशन याद कर लिया है, से हाई का डेफिनेशन याद कर लिया है कि जब तक इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होता है तब तक जो पहली बार जो एड्रेस बनाता, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 बनाता, तो अब से हाई 2 की जगह 1 2 3 4 5 डाल देगा, राइट, और मेरा पहली बार कंपोनेंट लोड कर देगा। लेकिन अगली बार जब ये काउंट बदलेगा तो ये फंक्शन दोबारा बनने की कोशिश करेगा, तो ये कहेगा दोबारा क्यों बन रहा है, क्योंकि मुझे पता है तुम तो वही फंक्शन हो। दैट मींस अब ये फंक्शन चाहे किसी भी तरीके से वापस लौटे इस कंपोनेंट के पास, मेरा ये कंपोनेंट जानता है कि ये वही सेम फंक्शन है, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज कॉल बैक। This is the same. This is the approach that is going to be there when it comes to use memo, use callback, React.memo, debounce and throttle. ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक है जो तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी whenever you want to do front end optimization. और अगेन ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन शुड बी ऑन रिएक्ट, शुड बी ऑन नेक्स्ट और व्यू, नहीं। आप कहीं भी इस चीज को कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि यू आर हैविंग अ फ्रंट एंड, बट यू शुड हैव अ फ्रंट एंड व्हिच इज ऑप्टिमाइज। तो जरूरी नहीं है आपको कि आप सीधा जाके डिबाउंस और थ्रॉटल लगाने लगिए। लेजी लोडिंग से स्टार्ट करिए, कोड स्प्लिटिंग करिए, अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करिए, जेपीजी यूज मत करिए, पीएनजी यूज मत करिए, सीडीएन का यूज करिए। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ही सिस्टम डिजाइन बनाती हैं आखिरी में जाके। बेस्ट प्रैक्टिसेस ही परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करती हैं, कि अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल एट द एंड। तो आपको पूरा कोड एक बार में दोबारा सही नहीं करना पड़ेगा, आप छोटी छोटी चेंजेस करते चलिए एंड योर फ्रंट एंड विल बी ऑप्टिमाइज्ड। Okay, so this is it for this session. We have discussed few things related to front end optimization. तो याद रखना जो हमने 8-10 टेक्निक आज डिस्कस करी है कि कैसे काम करती हैं और कब कब इनका यूज किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन के बारे में बताता हूँ, जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ऑन फ्राइडे,
we'll be trying to discuss the APIs as well कि API इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड में फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और फ्रंट एंड में और कैसे आर्किटेक्चर काम करता है, माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, राइट। और उसके बाद आपका एक्सियोस क्या होता है, फैच क्या होता है, आपका 10 स्टेप क्वेरी किसे कहते हैं, रिएक्ट क्वेरी क्या है, इस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एपीआई कॉल्स लगाना या बाकी की चीजें फ्रंट एंड में ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकते हैं। और अगेन सिंपल डिस्क्लेमर ये है कि ये सिर्फ रिएक्ट तक सीमित नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड टू रिएक्ट। द गोल इज सिंपल टू लेट यू थिंक बियॉन्ड रिएक्ट, कि भाई सिर्फ रिएक्ट एक मीडियम है इंप्लीमेंटेशन का। मैं तुम्हें दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि रिएक्ट से ज्यादा टाइम लोग कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैं रिएक्ट में दिखा रहा हूं। मतलब इट इज नॉट लाइक कि आप लेजी लोडिंग को नेक्स्ट में नहीं डाल सकते या व्यू में नहीं डाल सकते या किसी और चीज में नहीं कर, डिबाउंस आप जेएस में नहीं कर सकते या जे क्वेरी में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मीडियम या कुछ भी हो सकता है। आपको बस प्योर एल्गोरिदम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दो स्टफ। ओके, so I'll see you in the next session, that is on Friday, and we'll discuss few more things related to front end as well. Okay, so if you're having any doubts, you can let me know. Otherwise, we can wrap up the session. Let me check comment. कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ड्रॉप योर क्वेरीज। Tell me if you're having any question, otherwise we can close the session. I have done my interview at Case Point 3 days ago, but not got any result yet. If you're not getting a response, you might be on freeze, or you can consider yourself as not selected. I will be very, you can say, how was your interview from your experience? How much time they have taken your interview? What was the duration of time the interview goes on? कई कई बार क्या होता है ना कि आपको इंटरव्यू के ड्यूरेशन से पता लग जाता है कि सिलेक्शन है या नहीं। बिकॉज द सेकंड ऑप्शन इज, हो सकता है आप थोड़ी देर होल्ड पे हो, दे आर आल्सो कंडक्टिंग फ्यू मोर इंटरव्यूज टू गेट द बेटर कैंडिडेट। अगर इफ यू आर दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड कैंडिडेट, देन दे विल बी मूविंग विद यू। ऐसा होता है, कई बार कंपनियां ट्राई करती हैं कि मल्टीपल प्रोफाइल्स का इंटरव्यू कराती हैं, देन दे डिसाइड कि विच वन टू वन बोर्ड। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि अगर थोड़े दिन उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है तो ये हो सकता है। एक बार मेरा स्टूडेंट का, आई नो स्टूडेंट वाज यू कैन से अखिलेश, देयर वाज वन स्टूडेंट नेम अखिलेश दैट आई हैव ट्रेन्ड। उस स्टूडेंट का 1 महीने तक होल्ड पे था एडोबी में सेकंड राउंड के लिए। उसके बाद उसको कॉल आया कि नाउ वी आर गोइंग अहेड विद यू। 15 मिनट एंड दे आर 15 मिनट, देन यू कैन कंसीडर कि इंटरव्यू डज नॉट गो वेल। 15 मिनट, कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू की ड्यूरेशन से पता लग जाता है कि व्हाट एक्चुअली द फिनोमेना। 15 मिनट इज समथिंग that they are just doing formality as well, कि if they don't think कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो भी उन्हें फीडबैक लगा होगा। कई बार ये टू वे काम करता है। कई बार आप ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपने पूछे, पर उन्होंने 15-17 क्वेश्चन अगर 15 मिनट पूछे, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं होने चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि यू kept on skipping the question कि I don't know this question, I don't know this question, that can be the reason कि वो 15-17 क्वेश्चन पूछते रहे हो। ऐसा हो सकता है, राइट? कि आज आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे, तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, देन आउटपुट इज क्लियर कि दे आर नॉट गोइंग अहेड। बट अगर आपने क्वेश्चन स्किप किए हैं कि ये नहीं आता है सर, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हो सकता है इज आल्सो आंसर इज क्लियर कि दे आर नॉट गोइंग अहेड। बट आप एक बार एचआर को फॉलो अप डाल सकते हैं मेल। सिंपल, सबसे सिंपल आंसर होता है बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी पोलाइट बट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि दिस इज अ कॉर्पोरेट रिलेशन, राइट? यू कैन ड्रॉप अ मेल। फेमिलियर थे आंसर के साथ? ओके,
Then you can ask for directly feedback from HR कि just wanted to on campus placement था तो time लगेगा. If it was a on campus placement, it will take time. Okay. ऑन कैंपस प्लेसमेंट में मेरा तो 7 7 दिन बाद रिजल्ट आता था. आई गिवन अ इंटरव्यू इन ब्रॉड रिच कंपनी इन बैक इन 2022. 7 दिन बाद प्लेस रिजल्ट आया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. अगर कॉलेज प्लेसमेंट है देन इट शुड टेक टाइम, क्योंकि कॉलेज बॉडी के थ्रू आता है, वो प्लेसमेंट बॉडी के थ्रू आता है, फिल्टर आउट होके, तो टाइम लगता है. कंपनीज कॉलेज को शेयर करती है, कॉलेज देन रोल आउट करता है एज अ नोटिफिकेशन. ठीक है, you have to wait for that if college is giving with output. Okay, okay guys, so आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेयर we'll discuss few more techniques related to front end and some API technique as well. REST API, GraphQL, those kind of stuff we'll be also discussing. So till then, you take care, okay, and have a great day ahead. Thank you.